80-year-old Kripal Singh Malviya, a farmer from Ramnagar village in MP, has been cultivating at least 3 crops a year since a check dam close to his field was built by ITC. He uses sprinklers to grow his crops as it requires minimum usage of water. Prior to the construction of the check dam, his land was mostly unirrigated and he could only grow 1 crop per season. ये जो ITC सुनेरा मिशन के द्वारा हमें बताया गया कि एक फसल के साथ साथ आप 2 फसल, 3 फसल ऐसे ले सकते हैं, तो हमने पूछा कि सर कौन सी ऐसी फसल है जो तीसरी बार भी आ सके, तो वो ऐसी फसल मिले हमें कि जो कम से कम समय में आ जाए और हम उसका लाभ ले सकें सर। तो सर लोगों ने बताया कि हमारे पास एक है कि ऐसी फसल जो आप ले सकते हैं। मैंने से बताइए तो उन्होंने बोला एक मूंग की फसल है जो कम से कम समय में आपको जल्दी तैयार हो जाएगी और कम पानी में आ जाएगी सर। Boosting agricultural production and farm income of rural farmers like Kripal Singh Malviya is ITC's Mission Sunehra Kal program under their watershed development project. The project aims to conserve, augment and manage the natural capital of the villages through sustainable natural resource management, including agricultural and watershed development. पानी कम है हमारे पास, लेकिन स्प्रिंकलर के माध्यम से हम 1 से 1 एकड़ 1.5 एकड़ में फसल पैदा कर सकते हैं सर, इतने कम पानी में। फ़ायदा हुआ ना सर हमें। 3 पहले कम पैसे आते थे, अब 3 फसल लेते हैं तो ट्रिपल आय हो गई ना हमारी सर। This week on India Indeed series, we delve into the CSR initiatives of ITC Limited, one of India's foremost diversified conglomerate. Inspired by the overarching vision of sustainable development and inclusive growth, ITC has consciously engendered in its triple bottom line approach of contributing to the economic, environmental and social capital of the country. If you look at the natural sources of development and growth in villages, there is a need today in rural India for them to get the benefit of capital, for them to get the benefit of resources, because otherwise the gap between the urban prosperity and rural prosperity is widening. The quality of life that is lived by urban sort of residents and rural Indias in terms of connectivity, infrastructure, there is a wide and yawning gap, and therefore it becomes important for corporations to step in and fill this gap. No, firstly, ITC's CSR initiatives, the key stakeholders with whom we work are 2 sets of people. One is all the communities who live around the agricultural operations of the company, where we source our agricultural raw material for many of our businesses. And second is around all our factories, a number of communities that live there. ITC's 360-degree CSR program focuses on the following key areas: E-Chaupal, social and farm forestry, watershed development, women's empowerment, livestock development, primary education, skilling and vocational training, public health, sanitation and solid waste management. Tej Singh is a progressive farmer from Ramnagar who has adopted several sustainable agriculture practices as a part of ITC's watershed project. अब स्थिति ये है कि हमारे यहाँ की कम से कम ये नदी के साइड के बाद में जो इधर वाली सारी ज़मीनें हैं, ये ITC मिशन के तहत जो तलाइयाँ और खेत तालाब खोदे हमने, उससे कम से कम 1800 एकड़ ज़मीन सिंचित हुई रामनगर। उसी से मजदूरों को मजदूरी भी मिली और किसानों ने भी तरक्की की। ITC works with NGOs to mobilize local communities to form water user groups. These water user groups undergo intensive training in watershed management techniques, structure maintenance, water use regulation, and formulation of user charges. Besides, they plan, implement and monitor all activities including the building of micro-water harvesting structures, adopting suitable water-saving technologies and undertake soil and moisture conservation measures.
वाटर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारे डायमेंशंस कवर होते हैं कि जब हम एक गांव में पानी के लिए काम करने जाते हैं तो निश्चित रूप से पानी किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, तो एग्रीकल्चर फिर वहाँ पर इंसर्ट होता है। तो हम जब वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें पूरे रूरल डेवलपमेंट के लिए ही काम करना होता है, हमें एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट के लिए भी काम करना होता है, हमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी काम करना होता है, हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना होगा, हमें बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन को लेकर भी काम करना होगा। तो एक वाइड टर्म है वाटर कंजर्वेशन, लेकिन उसमें सारे चीज़ें आकर जुड़ जाती हैं। Bhupendra and Kailash are second generation of farmers belonging to the E-Chaupal in their village of Ichnapur. ITC's E-Chaupal leverages the power of information and technology to empower farmers with knowledge on farming best practices and latest technology, as well as updates on weather and market prices. Ashutosh is the Sanchalak of their E-Chaupal. Trained by ITC, he is an advisor to the farmers of the village. Since Kailash has joined E-Chaupal, his input and farming income has gone up by 3/4. E-Chaupal provides transparent market linkage through the Samyojak, ITC's buyer in the mandi. Initially, farmers were restricted to sell their produce in the local mandi and go through middlemen. Prices in return were low. But their investment in productivity is fully rewarded in the Hardoi E-Chaupal when they sell to ITC. Now, E-Chaupal is a unique initiative about 17 years ago that ITC had started, where you brought in technology to the farmers. You have selected somebody from within village, a farmer, as a Sanchalak. And with this level of local presence, whether it is water or it is sanitation or it is skill building, it provides a platform for engagement in rural. So it is today reaching out through a complement of desktop computers and the mobile phones as it has evolved, reaches out to more than 4 million farming families across the country. In the village of Ratanpur, majority of the small and marginal farmers are not in a position to bear the cost of buying agricultural equipment. Through the farm mechanization process of E-Chaupal, ITC is popularizing the concept of custom hiring services or CHCs. CHCs rent out farm machinery to farmers who cannot afford to purchase high-end agricultural equipment apart from servicing old machinery. ये जो हमारे पास साधन नहीं थे और ना ही हमारी इतनी क्षमता थी कि हम जो इतने महंगे यंत्र खरीद के ला सकते थे, ये ITC मिशन सुनहरा कल के माध्यम से हमें यहाँ पे मतलब किसान का उत्थान बढ़ाने के लिए ये दिए गए हैं। और उसी से हम क्या करते हैं, इसका हमारा नियम है कि पहले हम सबसे पहले गरीब किसान को देते ही है, गरीब के बाद में फिर उसके बाद में जो होता है बड़ा होता है उसके बाद संपन्न होता है, तो उसको बाद में मिलता है ये। Another feather to the cap of E-Chaupal is the Chaupal Sagar, rural services hub where villagers buy items of daily need and sell their agricultural produce, where farmers can sell their commodities and buy almost everything including cosmetics, garments, electronics, appliances, packaged food and even tractors. निश्चित तौर पर जो हम संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको एक प्रेरणा मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है कि ये जो काम हो रहा है ITC चौपाल सागर माध्यम के साथ में सुनहरा कल, जिसका नाम दिया गया है सुनहरा कल, यानी हमारा भविष्य तय करेगा कि इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो उसके माध्यम से आसपास के गांव वाले भी एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ हम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और ये बात करते हैं कि अब हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित तौर पर ये काम आगे बढ़ाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। After separation from joint family, Mr. Raghu Patel from Gurbela village received 3 acres of land and 2 unproductive cows. But through ITC's livestock development program, he now owns 38 cows, milk collection center, milking machine and a well-constructed house.
पहले क्या था कि हमारे पास बस एक ही जानवर था, उससे हमने धीरे धीरे उसी से बढ़ाया। आईटीसी के द्वारा ही सीवन करवा कर बछिया उछेरना चालू कर दिया। उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि जैसे चारा आता है आईटीसी में या कोई भी जो भी स्कीम आती है वो बताते हैं उसके बारे में, तो उससे बढ़ते बढ़ते आज करीबन मतलब पर डे एक दिन का 400 लीटर के समथिंग हमने दूध कर लिया। ITC's livestock development initiatives offer supplementary livelihood options to rural families, providing them with additional income opportunities. Targeting rural households, comprehensive services including artificial insemination, animal feed and healthcare management are provided right at the doorstep through village cattle development centers managed by trained local community members. These early steps have paid rich dividends since then. These are our agribusiness catchment. If you see, livelihood here is highly dependent on agriculture. So if you want to diversify risk on agriculture, which is with climate change and many other issues, we need to diversify livelihood portfolio also. So we thought the second best livelihood option in these areas is livestock. So we started working with small and marginal farmer to improve their existing livestock herd, so that he has a daily income of from milk, and he is not fully dependent on agriculture. Specifically designed for women from economically weaker sections of rural communities, ITC's Women Empowerment Program aims to provide them with sustainable economic livelihood opportunities through financial assistance as well as skills training. Women are motivated to form microcredit self-help groups so that they can build up small savings, finance self-employment and micro-enterprises. Under our Women Empowerment Program, they are mentored on weekly basis on how to run the micro-enterprise and other life skills. So and then in 2 years, with an objective, at the end of the 2 years, they would be earning at least 3,000 rupees, and they would have two sets of earning livelihood option. So one which she creates from earning from this first one. It also focuses on financial inclusion, basically literacy also, and other social development indicators. Soni Devi is a widow and sole earning member of her family. She could barely get 2 times of food for herself and for her children. After joining the ITC program, she got cosmetic shop that helped her for regular income. Now she has been earning 6,000 rupees per month. देखिए सर, पहले तो जो था वो तो है ये है, लेकिन आज सर हमको ITC तरफ से जो सामान मिला सर, उससे आज हम बहुत खुश हुए हैं, और उसी से तो हमको हौसला हुआ आगे बढ़ने का। हम अपने आप तो छोड़ो ना सर आगे बढ़ाएं, मेरे पीछे बहुत सारे सर का हाथ है जो कि वो हमको भरोसा दिए और सिखाएं, दीदी आप ये कीजिए वो कीजिए। पूरा काम तो उनका है, हम तो सिर्फ आगे बढ़ते गए, थोड़ा दिमाग हम अपना लगाएं। सारा सर तो सर ही लोग हमको दिमाग दिए हैं। A second step towards women empowerment is enabling marginal women farmers to enhance their knowledge and skills in modern agricultural practices. ITC's farmer field schools exclusively for women agriculturists cover a wide range of best practices, such as improved seeds and balanced fertilizers, as well as techniques for scientific land use and water conservation. हमको ITC मिशन सुनहरा कल के माध्यम से हमको किसान पाठशाला से जोड़ा गया। हमको उससे जो हम खेती करते हैं उसकी हमको बहुत सारी जानकारी दी गई, जिससे हमारे पास छोटे छोटे खेत है, ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है हमारे पास, बहुत छोटे छोटे खेत है। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो छोटे छोटे खेत है उनमें बहुत कम पैदा होती थी। कभी कभी तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि हमारे पास बीज भी नहीं निकल पाता था। और अब ITC मिशन सुनहरा कल के माध्यम से हमको ट्रेनिंग दी गई, हम मिट्टी परीक्षण भी करवाने लगे।
ITC's primary education program aims to strengthen the level of primary education among rural communities. Infrastructure assistance provided to government schools includes classrooms, separate toilets for boys and girls, hand wash and drinking water station. Further expanding their vision on sanitation, ITC's primary education program lays emphasis particularly on sanitation and health. Students and teachers are trained on WASH, which is water sanitation hygiene principles, and students are motivated to form WATSAN or water and sanitation committees and child cabinets to take ownership of WASH areas in schools, helping to promote behavioral change among children in their formative years. Sanitation program, we are focusing in 4 areas. One is creating gender-friendly, child-friendly toilet, sanitary block, and then the operation and maintenance, to establish a system within the school premises, perfect operation maintenance system. Third is capacity building, to improve the knowledge for the students, and student will act as a change agent. They will disseminate the message to their respective families, children, friends. And fourth is stakeholder involvement. जब आपके छोटे बच्चे घर में बेड पे पैखाना कर देता है तो आप उसे पोंछ देते हैं, ना कि धोते नहीं हैं, और ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर साहब बोला आरटीसी वाला बीडब्ल्यूएस वाला दोनों मिलकर शौचालय बना रहल छै। ITC's Health and Sanitation Initiative seeks to address this serious issue by supporting the building and usage of toilets in the catchments of its manufacturing units, the majority of which are located in rural areas. लगभग 2014 से जो हुआ ना, ITC अपना मेरे गांव में, मेरे पंचायत में घूम घूम के हर जगह लोगों में सोच जगाया कि भाई शौचालय बनाओ और शौचालय को यूज करो। ये लोग के प्रयास से, जो ITC कर्मी प्रयास किया ना, ये लोग के प्रयास से आज मेरा पूरा पंचायत में शौचालय बन के रेडी हो गया और शौच मुक्त मेरा पंचायत हो गया। सबका मर्जी है, इच्छा है कि जैसे हमारे टीकारामपुर में ITC की तरफ से घर घर शौचालय पहुंचाए हैं, उसी तरह पूरा भारत, पूरा बिहार में है कि ITC की तरफ से शौचालय बनना चाहिए। In order to help manage household waste in a safe and cost-effective manner, ITC Limited launched its solid waste management intervention under Mission Sunehra Kal in October 2006. The program covers nearly 61,200 households all over India and involves door-to-door collection and management of waste 6 days a week. Each waste collector covers between 150 to 200 households daily between 7:30 a.m. and 1:30 p.m. They move around in a rickshaw trolley carrying dustbins for recyclable waste and for biodegradable and non-recyclable waste. Thus, primary segregation of the waste is done at the household level. नगर पालिका की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार हम लोग रोज घर का कचरा सफाई करके रोज हम वहाँ पर फेंक दिया करते थे, तो बिखरा हुआ रहता था और दोपहर के बाद या जिस समय पालिका के स्टाफ आते थे उसको उठा के ले जाते थे। लेकिन यह व्यवस्था जो थी सो दैनिक नहीं होती थी, कभी कभी बीच बीच में उसमें गायब भी हो जाता था, तो वहाँ पर जमा रहता था जिसका दुर्गंध फैलती थी, पर्यावरण को भी नुकसान होता था। लेकिन जब से आपके ITC की व्यवस्था शुरू हुई है सुनहरा कल का, तब से ये व्यवस्था है तो उसके आपके ट्रॉली वाले प्रतिदिन आते हैं अपने समय से और हम लोग घर का कचरा कलेक्ट करके अपने बाल्टी में निकाल के रखे रहते हैं, जो उसमें भी बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन डिग्रेडेबल है दो अलग अलग रहता है, तो दोनों अलग अलग उसी उनको ट्रॉली में दे देते हैं जिसको वो लोग अलग अलग संभाल के रख लेते हैं। 25-year-old Roshni Kumari in Munger has been learning the nuances of the hospitality and restaurant industry since April. Her father is a farmer and his income is not sufficient to sustain the finances of his family. Being a part of the course has given Roshni a ray of hope and dream of a job that can help her run the family. मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं होटल मैनेजमेंट की कोर्स करना चाहती थी,
क्योंकि मुझे ये जॉब शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं टीवी पे देखा था, मुझे अच्छा लगता था, और होटल में जैसे मैं जाती हूँ तो वेटर लोग परोसते हैं, उस तरह से खाना मुझे करना बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। इसीलिए मैं कोर्स करना चाहती हूँ। इससे मुझे मेरा मंजिल मिल जाएगी जो मैं करना चाहती हूँ। ITC's Skilling Initiative aims to build market-relevant skills so as to make potential job seekers industry-ready and employable in the manufacturing and service sectors. The initiative offers training in market-linked skills for the hospitality, automotive, electrical, retail, computer and construction sectors, as well as in a range of trades and services such as tailoring, beautician, besides nursing and security. It's a 3 months classroom training followed, and this classroom training is also for a better practical exposure. They are trained in very well equipped labs. They are given robust practical training, and then they are placed in entry level jobs of starting at around 6,000, 7,000. Stories of men and women, lives and lands, fates and destinies. Stories of compelling voices who have experienced change, transformed by an abiding vision to create a larger societal value. ITC's globally acclaimed gamuts of CSR initiative are enriching rural India in creating a better tomorrow. Today it's a matter of great pride that with the collective efforts of the company and its stakeholders, we have been able to create over 6 million sustainable livelihoods, particularly in rural India. The focus on enriching the environment has led us to take several initiatives that have today made ITC a carbon positive, water positive and a solid waste recycling positive company for a decade now.